We had completed the idam shabda also. Yes, bro. Now, 42 completed. 243. एतदिदमोरेनः कथितानुकथने द्वितीया टौसु. Etad and idam are replaced by ena when there is kathitanukatana and dvitiya or when ta or os follow. Now, what is kathitanukatana? Kathitanukatana means it is the repetition of something that has already been mentioned. Kathita anukathana. Kathit is something which has been said, mentioned, and anukathana is repeating it. In other words, it is the re-employment of the same word in a subsequent part of a sentence. So let's see. So when kathitanu kathana is there, when repetition is there, then etad and idam are replaced by ena when dvitiya, ta, or os is following. For example, etam dikshaya atho enam pathaya. Example is given. Etam dikshaya atho enam pathaya. Now, etam is 2.1 from the word etad. Etam dikshaya, initiate him or initiate this person, etam. Now, atho, then after that, thereafter, enam pathaya, like teach him. So this etad or etam, like him, is repeated again. Initiate him and teach him. So him is repeated again. So this is katitanukathana. So when second time it is referring to him, that person, then they have used enam 2.1. So etad plus dvitiya is replaced by ena, and then dashaftara damshas or arama haraha enam. So this is how we get enam part here, 2.1. So basically you can say that etam is a pronoun for some person, right, in masculine gender. And enam is further pronoun for pronoun. I mean, in very layman language, you can. Enam is a further pronoun for the pronoun of a noun. So, so enam is like pronoun for etam. Etam is a pronoun for some person. Similarly, another example given is imam dikshaya. So this imam is from the word idam. So imam dikshaya atho enam pathaya. Same thing. Initiate him and teach him. So enam. So like that, when dvitiya vibhaktis are following, when ta is following, and when os is following, then this ena is applied, and then we do the declension. So these are the forms, optional forms. Enam, eno, enan, enena, and os, enayo, enayo. Okay. There are also examples given here. For example, etena ratrau harir gitah. This person praised Hari with songs at night. Atha enena aharapi pujitah. Later, he worshipped Hari all day long as well. So first etena 3.1 ta, and then because by the same person. So enena, enena. And in this way, other examples are also given here. You can go through them. Adaso dasya sahasau sorauch. Adaso dasya sahasau sorauch. The of others changes to sa when su follows, then su becomes ouch. Now this is another Krishna nama, others. Others plus su. So we had that rule. Tadadi saptanam sansarasya aramaharaha. Tadadistah sah. No, what is that? Dasya jama tadadistah sah sau. Tadadi saptanam sansarasya aramaha. So sansarasya aramaha.
because Vishnu Bhakti is following, so Sansara becomes A, right? Other plus Su. Then the sutra says here in 244, in that sutra it was said Dasya Chamaha. In that sutra, Tadadi Saptanam, it was mentioned Dasya Cha Maha. If there is the Rama in the Prakriti, then the will become Ma. But this sutra is a specific sutra, 244. It says that the of others will become Sa when Su is following. So the becomes Sa when Su is following. And further, the sutra says So Rauch. Su will become Ouch. So Asa plus Ouch. Now Cha has Cha Rama. Ouch has Cha Rama as the indicator letter. So Sansarasya Harashtiti is applied and we get Asau. Asau. An example, Nasa Vrishir Yasya Matam Na Bhinnam. Munis, they all differ from one another. You know, their opinions are all different. And if the opinions are not different, then they are not considered Munis. Interesting. So Nasa Vrishir Yasya Matam Na Bhinnam. So Na Asau Rishi. If you do the Pada Vicheda, Sandhi Viched there. So it's Na Asau Rishi. So Asau Rishi Nah. Yasya Bhinnam Matam Na Asti. So Asau 1.1. He's not a Rishi. He's not a sage. Then Adomat Parasya Sarveshwarasya U Yathesht Siddhi. Don't think that I'm not listening to the sutras. You keep on memorizing, I'll listen. And we will not move ahead without recitation. So, school time is over. This is college time, like college kind of studies. No regular, uh, what do you say? No regular, how will you say that? Follow-ups, surprise follow-ups, immediate. Adomat parasya sarveshwarasya yateshta siddhi. Now, the second is 1.2, others plus O, as you can see. Tadadi Saptanam is applied, right? Sansara becomes A. And now, Dasya Chamaha. By that sutra also, when a Vishnu Bhakti is following, the becomes Ma. So it becomes Ma. So Ama plus Au, Odvai Au, so Amau. Amau. Now this sutra 245 says, a Sarveshwara that comes after Ma of others either becomes U or U, depending on whether that Sarveshwara is a Vamana or a Trivikrama. In simple words, now this word is Amau. Sutra is saying, if we have a Vamana Sarveshwara after Ma Rama, then that will be replaced by Vamana U. If we have a Trivikrama Sarveshwara after Ma Rama, then it will become Trivikrama U. So here we have a Trivikrama Sarveshwara, right? Au is Trivikrama. Au. So it becomes the long U, so we get Amu. So in simple words, you decline the whole thing and just consider, just see if it is Vamana, then Vamana U. If it is Trivikrama, then replaced by Trivikrama. That's all. Amu. Now going back to that sutra, Idu Detam Dvichanasya Madivadi Varjam, Sandhi Sutra. Hmm. So a word ending with Trivikrama U in Dvivachana. So this is an example. Amu is a dual ending with Trivikrama U. Right? So Amu. Then Adasa Eta I Bahutve. Now others plus just one second. Others plus just 1.3. Tadadi Saptanam is applied, the Sechamaha is applied. And what was the sutra? Uh, Krishna. 225.
225 प्रभु जी। कृष्ण नाम कृष्ण तो यशस्वी ही। Krishna, yes. Krishna Nama, Krishna to just a she. And so we get Ame, Advai Midvai A, Ame. Now, although by the previous rule, A would have become long U, because A is Trivikrama. But this sutra is going more specific. It says the A of others changes to Trivikrama E in the plural. So this is more specific. So A rather becomes Trivikrama E. So we get Ami. It's not the Ammi Jan, Ami, Ami. Just Ami, like they, plural, they. So Asau, Amu, Ami. Similarly, you can do the rest. Amum, Amu, Amun, Amuna, Amubhyam, Amibhihi, ityadi, ityadi. You can do the whole thing. Amushya, Amushmin, Amisham, Amuyo, Amushmai. Okay. Then the next word is Dvi. Dvi means two. So it's always decline in Dvivachana, dual. So Nadvir Maha. The the of Dvi does not change to Ma. So Dvi plus O, and 238. What is 238? Tadadi Saptanam Sansarasya Arama. Yes, Tadadi Saptanam Sansarasya Aramaha. The Sansara becomes A. Because Dvi is also one of those Tadadi Saptanam, the seven words from Tad Yad Etad. So Sansara becomes A. Now the sutra also said Dasya cha Maha. Da becomes Ma, but this sutra is prohibiting it. It says Nadvirma. The da of Dvi will not become Ma. Otherwise, we won't be able to trace it, right? If it is Mri, something like that, instead of Dvi. So Dva plus Au, Odvai Au, Dvau. Dvau. Tau, Dvau, Balakau. Those two boys, Kridadah, are playing. Ityadi. Similarly, then Dvi plus Bhyam, Tadadi Saptanam is applied, Sansara becomes and then Krishna se Trivikrama Gopale. Krishna becomes Trivikrama when Gopala is following, so becomes Dvabhyam. Similarly, Dvayoho, like Krishna Shabda, Sarva Shabda. So, yes. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Prabhuji. प्रभु जी, like the एक और द्वि, why is it in Krishna नाम? I remember the द्वि शब्द was also in Lakshmi Ling. No, there was no Dvi there, I believe. It Three. was द्वे 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 द्विभ्याम द्विभिः ऐसे। No, त्रि चतुर ये शब्द थे ना, सब द्वि तो नहीं था, आई थिंक. I guess I recall, maybe I'm not sure, but I guess I've seen उसमें ऐसे था विष्णु भक्ति like द्वे द्वे द्विभिः ऐसे था। हाँ, त्रि चतुर अष्टन ये सारे शब्द तो थे, शश, बाकी संख्या तो थी. ये तो नहीं था, एक द्वि नहीं था. आप एक बार चेक कर एक बार लीजिएगा. चेक कर लूंगा। Anyhow, whether it was they were there or not doesn't matter. Um, One more thing is that because Dvi follows declension in, Dvi is using the sutra here, the Krishna Nam Sutra. So how can it be declined there? So that's also one thing. Anyhow, you can check it. You will not find it there. Okay, next is interesting. The next words are Yushmad and Asmad. Yushmad basically you, like second person. Asmad in first person, I. So Jiva Goswami, I have heard in Panini, they have declined it, like each form. But Jiva Goswami has kept it simple for us. He has not done the declension. He has just given the tables and just asked us to memorize them. So Yushmad Asmados Tvam Aham Adaya Swadina Saha. The Nipatas beginning with Tvam and Aham simultaneously replace Yushmad and Asmad and the Swadi that comes out. So basically, Jiva Goswami has simply given the words as Nipatas. So we just need to memorize them. So the Yush, and these are actually very important, both of them.
This Yushmat and Asmat tables, very important. So Tvam Yuvam Yuyam, Tvam Yuvam Yushman, Tvaya Yuvabhyam Yushmabhihi, Tubhyam Yuvabhyam Yushmabhyam, Tvat Yuvabhyam Yushmat, Tava Yuvayo Yushmakam, Tvai Yuvayo Yushmasu. So that was the Yushma table. Especially these Ekvachanas, we see them every now and then. Tattvamasi, Tvai Dhrita Savas, Tvam Vichinvate. In Gopi Gita first shloka, two forms are used. Tvai Dhrita Savas, Tvam Vichinvate. Tvaya Khalu Puranani, Bhagavatam chapter 1 for Suta Goswami. Tvaya Khalu Puranani Sete Hasani Chanagha, Akhyadani Api Adhitani. Tvaya by you. Tubhyam Namaha. Tubhyam Namaha. Tvadiya Vastu Govinda. Tubhyameva Samarpaye. Tvat. Tvat is also there. Tava Kathamritam Tapta Jivanam. So all these ekvachanas, especially ekvachanas, are very frequent, but others also are used like they are used a lot. Similarly, Asmat table, first person, Aham. Yes, Prabhuji. Prabhuji, what does actually Nipat means? Nipat, the definition must have gone somewhere like. So Nipata means Prakriti Pratyayau Sahai Vadeshau iti Nipataha. When we replace both the Prakriti and Pratyaya together with some final word. So that is called Nipata. Prakriti Pratyayau Saha Eva Adeshau. Adesho means Adesho Virinchi, replacement. So Prakriti Pratyayau Saha Eva Adeshau Nipataha. So that is called Nipata. When we replace both Prakriti and Pratyaya with something. And Prabhuji, पर इसमें replace कैसे हो रहा है प्रकृति और प्रत्यय? हाँ, यहाँ पर for example Asmad Yushmat plus Su. So Jiva Goswami has not done the declension, so he's simply saying Yushmat plus Su equals to Tvam. So Tvam has replaced, or they both are replaced by Tvam. Similarly, Yushmat plus Au is replaced by Yuvam. So in this way, these are Nipatas. Got it, Prabhuji. धन्यवाद. Asmad aham avam vayam mam avam asman maya avabhyam asmabhi mahyam avabhyam asmabhyam mat avabhyam asmad mama avayo asmakam mai avayo asmasu. If you want, you can also write the definition of Nipata. Prakriti pratyayau sahaivadeshau nipatah. Yeah, so you can write it. So this also is very common, these forms, especially the ekvachanas, aham, mam, maya, mahyam, mat, mama, mai. And Prabhuji, like the word we did, asau, this word, is it not? It's not used much now. It is used. But in comparison with like tadiyad, little less maybe, but it is used. Okay. Okay, this definition is given, what I was mentioning also, of nipata. Purva parayoho sahaivadesho nipataha. So Purva is Prakriti and Para is Pratyaya. So I was mentioning Prakriti Pratyaya. Jiva Goswami is giving Purva Parayo, same thing. Sahaivadeshu Nipata. The simultaneous replacement of both the Prakriti and Pratyaya is called a Nipata. The definition. Okay. Yes, Prabhuji. You want to do more? Yes, Prabhuji. Okay. Vishnu Padadva Anvadeshitu Nityam. So basically now there will be a couple of sutras, 5, 6 of them.
which will actually tell us about some like some optional forms for this Yushmad and Asmat table. The words Vishnupadatva and Anvadeshitu Nityam are to be added in the next sutras. Their meanings will be mentioned in the next coming sutras. So 250. Yushman, Yushmabhyam, Yushmakam ityesham was, then Asman, Asmabhyam, Asmakam ityesham nas. When Yushman, so this is 2.3, Yushmabhyam 4.3, and Yushmakam 6.3 of Yushman table. So when these, they come after a Vishnupada, then they are optionally replaced by Vas. And then Sa becomes Vishnu Sarga, Sararamayur. So becomes Vaha. But they are always replaced by Vas when there is Anvadesh. Anvadesh is same as Kathitanugatana, repetition. In simple words, just consider Yushman, Yushmabhyam, Yushmakam are replaced by Vas also in some places. Similarly, Asman, Asmabhyam, and Asmakam, they are replaced by Nas. Like if you see Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, let's say which one? Tannaha Shanksitum Arhasi. Yeah, this one, see. Text 9. Tatra tatrangdasa yushman bhavata yad vinishchitam pungsam ekantatah shreyas. Then tan naha shanksitum arhasi. So this naha is actually the same naha which we are studying. Naha means here to us, asman. So this naha actually is a replacement of asman 2.3. You see? So they are actually used, these replacements. So Yushman, Yushmabhyam, Yushmakam replaced by was, and these three by nas. Naha. It becomes naha or no. Examples given by Jiva Goswami are Harir Yushmanavatu, may Hari protect you all, or it could be Harir Vo Avatu. Yushman or Vo. Vaha becomes Vo, Adarama Gopali or Nityam, right? Similarly, all other examples are given. You can go through them. Now, second is Tubhyam Tavayoste Mahyam Amayorme. 4.1 and 6.1, Tubhyam Tava are replaced by Te. And Mahyam and Mama, 4.1, 6.1 are replaced by Me. Like Krishna says a lot, Me Matam. Iti Me Matam. So that is Mama Matam, mine, my opinion, me. Like, okay, very famous. In India, especially, we keep on saying Namaste, Namaste, right? Greeting. That's actually a Sanskrit greeting, Namaste. So Namas means Namaha, like Krishnaya Namaha, Namaha, obeisances. And this that Te is actually this one. And that's actually Tubhyam. That's Tubhyam Namaha. So Tubhyam Namaha becomes Namaste. So Tubhyam Tava by Te, Mahyam Mama by Me. Examples are given, you can go through them. Then the next set is Tvam Mam Tvama. 2.1 Tvam is replaced by Tva. And 2.1 Mam is optionally replaced by Ma. Simple. So Haris Tvam Patu, may Hari protect you, or Haris Tva Patu. Similarly, Hari Ma Patu or Hari Ma Patu. Okay. Then Yushmad Asmad Vishnupadayor Vam Nau Tritiya Chaturthi Shashti Dvitve Natu Samase Nate Vakyadau Shloka Padadau Cha. So the 2.2, 4.2 and 6.2 of Yushmad
they are replaced optionally by vam, by no, no, vam and no. Like Harir Yuvam Patu, may Hari protect you both, 2.2, or Harir Vam Patu, 2.2. Similarly. So finally, these are the final tables. As you can see, it's on page number 284. So this is a must to memorize these two tables. Okay, we'll stop here. We'll resume. I think we're about to complete this section. Okay, let's complete it. Let's complete it. One more sutra. The next word is kim. The last one, Yushma Tasmat Bhavutu Kim. Now, Kimaha Ko Vishnu Bhaktau. Kim is replaced by Ka, which has A also, or Ram, when a Vishnu Bhakti follows. So, Kim plus Su. So, this sutra is applied Kimaha Ko Vishnu Bhaktau, and then we keep on applying normally, like Sarva Shabda. So, Kaha Kau Ke, Kam Kau Kaan. So, this Kim becomes Ka, and then we decline it like Sarva Shabda, Sarva. Kaha Kau Ke, Kam Kau Kaan, Kena Kabhyam. So, Kaha means who. Kau means who both. Kena means by whom. Kasmai unto whom. It's an interrogative pronoun. Okay, we complete the Purushottam Linga in Krishna Nama section. Anything you wanna say? Yes, Prabhuji, the Dwe one is on 291 page. We Two? have not done it. 291. मतलब हमने करना है अभी ये हमें करना है ना? Yes, sir, जी जी जी. हाँ. So that will be declined in 3 genders, but in Krishna Nama, not earlier. Yes. And Prabhuji, like आप WhatsApp खोल सकते हैं वो जो भेजा था एक भागवतम का एक बार आप देख लेते हैं. ये तो सूत्रस वाला है ना? नहीं प्रभु भागवतम वाला पीछे होगा. ये वाला? यस प्रभु. कौन सा श्लोक है ये? 1.7. 1:17-35. तो इसको श्लोक देखना पड़ेगा ना. श्लोक की फोटो भी भेजा करिए ना, वो फिर डबल स्क्रीन. चलिए कुछ हम करते हैं. श्लोक आप अपना अपना खोल लीजिए, क्या कर सकते हैं. 1:17-35. तो परीक्षितैव मादिष्टः सकलजातवेपथुः तम उद्यतासीमाहेदम उद्यतासीम दंडपाणि विबोध्यतम. तो परीक्षिता परीक्षिता. So Parikshita evam adishta. Okay, Parikshita 3.1. Very nice. Evam avyaya, right? Adishta 1.1. Saha 1.1. Kalihi 1.1. Nice. Yes, Rashvara Sareshwar Gopalyo. Good. Jata in Samas Vepatu 1.1. Vepatu, right. Then Tam 2.1. Yushmat. No. Tam is not Yushmat. Tam is Tat. From Tat. Okay. Yeah, like Yes. Sahataute Tam Tautan. Tam is 2.1 Tat Shabd. Then Udyata is in Samasa. Asim is 2.1 Asi. Aha is a verb.
Idam is idam. Idam is actually 2.1 here. Okay. Yeah, idam is 2.1 here. Idam ah. So saha idam ah. He said this. So it becomes object. So 2.1, not 1.1. Dandapanim is It is 2.1, 2.1. Eva is avyaya and udyatam is 2.1 again. Yes, right. And Prabhuji, like I wanted to know that in the Dandapanim, the Dand means a stick or like punishment. Pani Mhm. means hands. So how was it translated to Yamraj? This is actually compound. Now, see, in compounds, there are multiple kinds of compounds. Now, one kind of compound is, so in a compound, in a samasa, there are two words, right? Yes. And then it becomes a single unit, single word. So sometimes in a samasa, the focus is on the first word. Like both the words together will highlight the first word of the compound. ठीक है. Some that is called Purva Pada Pradhana Samas. So the first word is called Purva Pada, the second word in a Samas is called Uttara Pada. Okay? जी. So some Samasas they highlight the meaning of Purva Pada, first word. Some compounds they highlight the meaning of the second word. Now there is third category which is called Anya Pada Pradhan, where both the words they are together highlighting on something else. Something else. Hmm. 1 second. So the third category is Anya Pada Pradhan, when both the words they uh, focus on some other word. For example, Pitambara. Hmm. Pitam. Now Yellow there are cloth. two words are Pita and Ambara. जी. Pita means yellow, Ambara means cloth. But when we say Pitambara, whom are we referring to? Krishna. We are referring to Krishna. One who wears yellow cloths. So this is an example of Anya Pada Pradhan, where the focus is not on Pita or Ambara. We're focusing on Krishna who wears yellow cloth. Similarly, Dandapani means one who has danda in his hand. So the focus is not on danda nor on pani, hand. The focus is on the person who is holding the danda in pani, in hand. It will be more clearer in Samasa section, but you can still, maybe we can discuss sometimes, or you can see some videos, some tutorials about Samasas. Samasa is actually an interesting and a broad topic, so just this much for the time being. Dandapani together is focusing on some other word, like Pitambara is focusing on some other word. It is called Anya Pada Pradhan Samas. Anya Pada Pradhan Samas. The focus is on Anya Pada, not on the first or second word of the Samasa. Got it, Prabhuji. Like here we are focusing on the one who is holding the Dandapani. Yes, Danda in his hand. one who is holding the danda in his pani. Pani means hand. Okay. And Prabhuji, like even the in the samas of one यहाँ पे जो है एक श्लोक में कालिर जात वेपथु. Kalir Jata Vepatu. So how was like
मतलब हाउ, मतलब समास में 1.1 कैसे आ सकता है? बिकॉज हाँ, तो जात वेपथु भी समास है और ये भी इसी तरह का समास है. इट्स ऑल्सो लाइक अ सिमिलर काइंड ऑफ समास. बिकॉज जात वेपथु इज एन एडजेक्टिव फॉर कली. It's an adjective for Kali Yuga, the personified Kali. So when Kali was thus instructed by Parikshit Maharaj, so he started trembling. So jatah vepathu yasmin sah Kali, one in whose body trembling began. Such Kali. So this is also similar kind of samasa, anya pada pradhana samas. It's not the focus is not on Jat or Vepathu in the Samas. The focus is on Kali, in whose body the Vepathu, the traveling has begun. Jata. Jata means born, beginning. एंड So प्रभु this जी, is अगर this. Yes, yes. जैसे प्रभु जी अब पहले आपने बताया कि समास में जनरली 2 वर्ड्स होते हैं, तो अगर जैसे आपने ये बताया कि जात वेपतु इज एडजेक्टिव, सो मीन्स adjective could be added to the subject, so it can be many words, compound. No. See, Jata Vepathu is still two words compound. But compounds are also nouns. Samasas are also nouns technically. So जी. then we decline them. Suojas, Amoshas, Tabhyam base. All 24 forms are there. So Jata Vepathu will be like Vishnu Shabda. Jata Vepathu, Jata Vepathu, Jata Vepathavah, Vepathavah, like Vishnavah. You know. So now it's an adjective for Kali. So Kali is separate word. Kali is 1.1, separate, like Hari Shabda. Jata Vepathu is Vishnu Shabda, Pulling, Purushottam Linga. They are not samasa together. Kali is not part of that compound. It's separate. Jata Vepathu is only the compound. See, even if it is not clear at this point, don't worry, because samasas are something which you will actually, I won't really say or use the word learn, I will use the word realize. So grammar also is a thing, is a product, is a thing, a vastu to be learned, but is also a thing to be realized. So you will realize a lot of principles, concepts eventually. And samasas are one of them. Okay. So yeah, just wait for your time for the things to unfold. It really takes time, believe me. Yeah, it takes time. Especially samasas, they're actually super easy, but you just need to develop that sense, and it will happen eventually. It will take some time, but you will need to do whatever you're doing right now, asking, like Hmm. thinking, asking. You have to do this, then only it will come to you, not freely. What is it? Pravishanti mukhe mriga suptasya singhasya the hitopadesh. Nahi suptasya singhasya pravishanti mukhe mriga उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः and nahi suptasya singhasya pravishanti mukhe mriga. That even a lion can't fill his stomach just sleeping. He has to put some energy, some udyama. So this udyama is a must, but the response from my side, which is a genuine response, is okay. One thing is that if you want to spend more time, if you really want to know, see some tutorials about samasa. You will get really nice tutorials for these compounds if you want to Actually, spend Prabhuji, time. I remember I actually watched, like I told you, the Ved Chaitanya's Prabhuji's class. So Uh-huh. I just saw, I was opening my notes. तो उसमें लिखा हुआ था प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः. It is Mm-hmm. बहुव्रीहि समास. बट मुझे Okay. याद ही नहीं, मतलब अच्छी तरह, क्योंकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा नहीं, बस पढ़ लिया नोट्स में. हाँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए सूत्र को स्पर्श तो नहीं किया, उन्होंने नहीं. टॉपिक वाइज प्रेजेंटेशन किया है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है. इट्स वेरी गुड. 96 97 लेक्चर्स जो उन्होंने डाले हैं यूट्यूब पे, दे आर वेरी गुड. और पर्सनली मैं भी रेकमेंड करता हूँ, कोई भी मुझे पूछता है तो उन्होंने बट सूत्रस को टच नहीं किया.
अब हम जिस पैटर्न में पढ़ रहे हैं, जैसे आपने संधि पढ़ी अभी तक, हम साथ में हमने यहाँ पर शब्द प्रकरण हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। तो अभी आपको इसमें से कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे पूरा, क्योंकि अभी हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं, सूत्र वाइज। तो इसी तरह से जब हम समाज तक भी पहुंचेंगे तो फिर आपको ये चीज और सेंस बनाएगी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। तो वो एक अलग मेथड है, ये अलग मेथड है। अभी हम अपने स्पीड से टॉपिक्स कर रहे हैं और काफी सब्सटेंशियल स्टडी हम कर रहे हैं, जो हम भूलेंगे नहीं, जो हम इम्प्लीमेंट करते आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज फाइन। समासेस जब आएंगे तो आप उसको करिए, बाकी धीरे धीरे और एक्सप्लोर करते रहिए, ताकि एक फाउंडेशन तो तैयार हो ही जाएगी, एक नींव तो तैयार हो ही जाएगी। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको जितना हो और एक्स्ट्रा पढ़िए, देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हार्म नहीं है। एंड प्रभु जी, एक्चुअली आई वांटेड टू नो, जैसे आपने बताया कि जो बृहद वर्जन भी मतलब मत्स्य अवतार प्रभु कर रहे थे, तो आप उसके जो फर्दर ट्रांसलेशन में भी आप लगे हैं? फर्दर ट्रांसलेशन में मतलब जो उनकी रह गई थी, कुछ आपने कहा था कि उनका तद्धित उनका प्रकरण रह गया। तद्धित तद्धित रह गया है। हाँ। सो आप प्रभु जी, आप कर रहे हैं फिर उससे, या फिर सम नहीं टीम? नहीं, उसको तो कोई नहीं कर रहा, पर मुझे मेरे सीनियर बोल रहे थे कि उसको कभी पूरा करना चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने देखो इतना मेहनत किया है। हम्म। पूरे 6 चैप्टर्स, बृहद का 6 चैप्टर्स, वो भी कमेंट्रीज वगैरह सब कुछ डाल के। तो आखिरी चैप्टर को तो हमें कर ही देना चाहिए। तो उस पे भगवान कृष्ण बलराम की इच्छा हुई तो पक्का उसको करेंगे। मतलब एक अधिकार भी होना चाहिए, और भक्तों की आशीर्वाद भी जरूरी है। तो लेट्स सी, करेंगे कभी भविष्य में। चलो इसको आज हम रिजोल्व करते हैं कि जब हम तद्धित पढ़ेंगे, व्हेन वी विल बी स्टडिंग तद्धित, देन अलोंग विद आवर स्टडी, क्योंकि उस समय हमारा काफी बुद्धि खुल खुल जाएगा ना, और तो उस समय हम इसको थोड़ा विल कंसिडर इट, विल कंसिडर इट तद्धित। Prabhuji, when I was in Mayapur recently, so I actually मैं वहाँ पे एक मतलब लाइब्रेरी थी, भक्ति विधान लाइब्रेरी, वेयर आई वाज स्टेइंग। सो वहाँ पे मुझे मिला जीव गोस्वामी हरिनाम व्याकरण अमृत। इट वाज पार्ट 2 प्रोविजनल एडिशन बाय इस्कॉन हरिनाम अमृत व्याकरण बाय पुरुषत्रय स्वामी एंड यदु दास ब्रह्मचारी. So it had 750 sutras from Laghu version plus 250 sutras from the Brihat. हम्म। So I just wanted that it was very कि मतलब ये इस्कॉन का ही है, तो ये भी मतलब यहाँ पे लिखा है भक्ति वेदांत स्वामी इंटरनेशनल गुरुकुल कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन। तो यहाँ इस्कॉन वृंदावन का जो गुरुकुल है, भक्ति वेदांता गुरुकुल, तो उसमें जब आईसीएसई बोर्ड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, प्री 2000, लाइक 20th सेंचुरी की बात है जब, क्योंकि हम्म, 2000 के बाद तो वहाँ आईसीएसई बोर्ड लागू हो गया था, क्योंकि हम्म, स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी बच्चों की। क्योंकि मैं भी वहाँ का पास आउट हूँ, थोड़ी हिस्ट्री तो मुझे भी पता है गुरुकुल ओके। की। तो वहां पर इसको पढ़ाया जाता था, हरिनामामृत व्याकरण को। इवन आप अगर उनको जानते हो, एक विश्वम्बर प्रभु करके हैं, हमारे गुरु भाई हैं, वो कीर्तन करते हैं, विश्वम्बर प्रभु, द मायापुरीज वाले, आपने शायद से देखा होगा। तो वो मुझे मिले थे मायापुर में अभी फरवरी में। आई थिंक प्रभु जी की वीडियो होगी, ऑफ हो गई, हरि बोल। हाँ, तो वो मुझे मिले थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो भी गुरुकुल के स्टूडेंट रह चुके हैं, वृंदावन गुरुकुल के। अहो सो ही प्रभु वाज, जी। वही जो विश्वम्बर प्रभु की मैं बात कर रहा हूँ, कीर्तनीय है, मायापुरीज, द मायापुरीज वाले। ओके, तो अच्छा। हम मायापुर में मिले थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो भी गुरुकुल वृंदावन के स्टूडेंट रह चुके हैं, और उस समय में उनको हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाई जाती थी बाय दीज डिवोटीज, जिनकी बुक है जो आपके हाथ में है। हम्म, तो पहले ये था हमारे इस कौन में, हरिनामामृत व्याकरण। हालांकि वो आई थिंक इतने अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पाया शायद से। तो फिर उसके बाद आई थिंक गोपी प्राणदान प्रभु और ने इसको अडेप्ट किया, मत्स्यता प्रभु ने, फिर उन्होंने मध्यमा वर्जन निकाला। आई थिंक उस समय मध्यमा वर्जन नहीं था। हम्म, तो ये ओरिजिनली ये लघु वर्जन ही था, अराउंड 750 सूत्रस जो आपके पास है, जो सबसे पहला जो लिखा गया था। उसके बाद ही बृहत बनाया गया था जीव गोस्वामी जी ने। हम्म, तो उन्होंने कुछ एक कॉम्बिनेशन निकाला होगा ना, कि 750 प्लस बृहत से कुछ मेन मेन सूत्र ले लिए होंगे, टू एक थोड़ा एक अच्छे से स्टडी करने के लिए।
ऐसा कुछ होगा, बाकी तो मैंने वो देखी नहीं बुक। And do we have the Lagu version, Prabhuji, right now with us? हाँ, लघु मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, इंग्लिश में नहीं, पर आई थिंक वो बंगाली स्क्रिप्ट में या फिर देवनागरी लिपि में है तो सही है वो। देव प्रभुजी, देवनागरी लिपि में मतलब ट्रांसलेशन वाइज? नहीं, ट्रांसलेशन भी उसका जो हिंदी अक्षर, हाँ, हिंदी अक्षर में, ठीक है। हिंदी अक्षर, तो वो है। ठीक है, तो अभी। Prabhuji, just I actually also, like after हम्म Gopi Pranjan Prabhu, Matsya Avatar Prabhu took over the Govardhan Sanskrit school. हम्म। So after it, don't you plan to, like you are in ISKCON, Prabhuji? आप तो मैं तो कर ही रहा हूँ अपने स्तर पे तो, क्योंकि गोपी प्रधान प्रभु का तो बीबीटी, सॉरी, ऑफिशियल स्कूल था वो, जो गोपी ऑफिस प्रधान। हाँ, दैट वाज एन ऑफिशियल ऑफिशियल स्कूल ऑफ इस्कॉन, बीबीटी स्कूल। आई थिंक बीबीटी भी उसको सपोर्ट करती थी। और अब गोपी प्रधान प्रभु प्रभुपाद डिसाइपल भी थे, उन्होंने भागवतम को कंप्लीट भी किया, राइट, जो बाकी पार्ट बचा था प्रभुपाद जी का। तो एक उनकी अथॉरिटी थी, और फिर उनके ही शेल्टर जी ने इसको कंटिन्यू भी किया। तो आई थिंक भगवान की जब इच्छा होती है, जिससे जो सेवा लेनी होती है लेते ही हैं। तो हम तो अपने स्तर पे कर ही रहे हैं, तो कुछ ऐसी सेवा होगी तो वो भी कर लेंगे। बट आई थिंक छोटे छोटे टोल, पर वो भी जरूरी है, क्योंकि एक अवेयरनेस होती है, ऑफिशियल अवेयरनेस होती है सोसाइटी में कि हाँ हमारे सोसाइटी का स्कूल है। जैसे अगर किसी को अगर नहीं पता होता कि जीव गोस्वामी इज अ गुड टीचर, या जीव गोस्वामी इज अ टीचर, तो शायद से नरोत्तम दास ठाकुर वगैरह वगैरह नहीं आते उनसे पढ़ने के लिए। तो एक अवेयरनेस तो होगी ना लोगों में, भक्तों में, कि हाँ जी वो गोस्वामी पढ़ाते हैं, वो एक स्कॉलर भी है और वो पढ़ाते भी हैं। देखिए, कुछ स्कॉलर होते हैं पर वो टीचर नहीं होते, पढ़ाते नहीं है, पर स्कॉलर भी हैं और वो टीचर भी थे, तो और वो पता था तभी तो पढ़ने आते थे भक्त लोग उनसे। तो ये जरूरी है। तो अब भगवान की प्लानिंग है, भगवान किससे क्या सेवा लेना चाहे। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत भक्त कर ही रहे हैं सेवा, तो देखते हैं। तो वो भगवान की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। don't you like plan to open official school? नहीं, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप हूँ, और ये सब प्रमोशंस मार्केटिंग, मुझे कई वक्त कहते हैं कि आप अपने कोर्सेज को थोड़ा प्रमोट क्यों नहीं करते, वो मुझसे होता नहीं है अपना एक तो, आप लोगों ने भी जितनों ने अप्रोच किया है वो मेरे को कहीं से अप्रोच ही किया, मैंने तो नहीं किया आपने भी जैसे मुझे अप्रोच किया, प्रभु जी ने भी मुझे अप्रोच किया, वो श्याम माता जी थी जो पहले थी, उन्होंने भी अप्रोच किया। तो मैं, मुझे वो पसंद नहीं है आउटरीच करना, अप्रोच करना। तो मुझे ऐसा लगता है मैं खुद का प्रमोशन कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अब कुछ खुद से कोई आता है तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, पढ़ते हैं। तो मेरा थोड़ा सा अलग टाइप है आउटरीच वाला नहीं है। तो आप पढ़ना, आप पढ़ाइएगा आप अच्छा पढ़ भी रहे हो, सही में अच्छा पढ़ रहे हो। तो आप इसको करके, इसको फिर आगे ऑफिशियल, जो आप बात कर रहे हैं ऑफिशियल आप Prabhuji, पढ़ाना है इसे। Prabhuji, actually, even if official, don't you think like so many gurukuls are there of ISKCON, like teaching there, or they have their other system, they like. तो जैसे बाकी गुरुकुल्स का मुझे पता नहीं, तो मायापुर गुरुकुल और वृंदावन गुरुकुल, तो वो दोनों से तो मेरा टच है। Hmm. आ, तो वो दोनों चाहते भी हैं कि मैं पढ़ाऊं उनके में। बल्कि आज ही मेरे को यहाँ वृंदावन गुरुकुल वालों का फोन आया कि प्रभु जी मंडे को मिलने आओ, हमें बात करनी है तो अब मैं मंडे को जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। तो वहाँ का जो स्टाफ है, जो टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं, तो वो जानते हैं। तो फिर आज ही उनका फोन आया, प्रभु जी मंडे को आना, मिलना है, बहुत जरूरी है, आपको आना ही है, कुछ पढ़ाओ पढ़ाओ, इस तरह से कुछ संस्कृत। और उन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे संस्कृत यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की है, अब बिल्डिंग बना रहे हैं वृंदावन में। तो ये वो शास्त्र और यूनिवर्सिटी नहीं, जस्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी। फर्स्टली। हाँ हाँ, ओके। एफिलिएशन वगैरह इनका हो गया है, और भी काम चल रहा है। पर इन्होंने हम्म जो वाराणसी काशी में जो शास्त्री और आचार्य के कोर्सेज होते हैं ना, डिग्री कोर्सेज, हम्म। वो इन्होंने यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं, भक्ति वेदांत ओके। गुरुकुल ने। तो ये लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं इस मामले में। तो अवेयरनेस तो ऑफ कोर्स फैल ही रही है। अभी बस वही है कि हम कितने एलिजिबल हैं और भगवान हमसे कितनी सेवा लेते हैं। आई थिंक मेरे को वही लगता है, बाकी भगवान प्रेरणा दे के सेवा तो किसी से ले ही सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी वाली बात मुझे लगती है, और भगवान कहाँ किसको फिट करेंगे वो तो फिर भगवान ही जानते हैं।
तो बल्कि आज ही मुझे फोन आया, तो आई वाज लाइक ठीक है, मंडे को मिलते हैं। एंड यू प्लान टू आल्सो लाइक अगर हुआ तो आप सिखाएंगे? हाँ मतलब ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जितना जितना डिस्कस करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हरिनामामृत व्याकरण तो आपको भी पता है, लंबा कोर्स है 3-4 साल का। उसको हम स्कूल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो सब डिस्कशन करना होगा कि हम कैसे करें ताकि वो बच्चा पूरा पढ़े या पार्शियली पढ़े या कुछ टॉपिक्स पढ़े। तो वो सब हम्म। डिस्कशन करने वाली बातें हैं। तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है वृंदावन गुरुकुल ऐसे। एंड प्रोबब्ली मेरा तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा पढ़ने में ऐसे कई बार टॉपिक आ जाते हैं, थोड़ा हो जाता है ढीला। जैसे आई यूज टू एवरी डे राइट द भागवतम श्लोकास। राइट नाउ आई एम ऑल्सो बीइंग अ लिटिल लेजी मे बी, like writing, figuring out. So that's why I'm not able just one night sing in so many days. नहीं उसको ठीक है, वो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, पर ट्राई करते रहना चाहिए, मतलब दैट्स माय थिंग कि भले प्रभु ही जी वो आप थोड़ा। डोज दे दिया करो। हाँ। प्रभु जी आप डांट दिया करो, थोड़ा डोज दे दिया। पर हम मेरा एक प्लान है कि थोड़ा कमेंट्री रीडिंग सेशन थोड़ा हम रखा करेंगे फ्यूचर में, थोड़ा टीकाओं को लेके वो मुझे करना है। वो होना भी चाहिए एक कमेंट्री रीडिंग सेशन। तो विल आई विल प्लान दैट। बाकी अपना रीडिंग तो करते ही रहना चाहिए, स्पेशली आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो संस्कृत वाला एंगल भी तो टाइम लेता है ना डाइजेस्ट होने में। जैसे जब मैं नॉर्मल रीडिंग करता था वो 45 मिनट समथिंग करता था, जब मैं संस्कृत के साथ रीडिंग करता था, जब मैं पढ़ रहा था, तो 1.5-2 घंटा लगता था, क्योंकि वो संस्कृत वाला एंगल भी समझना होता है श्लोक में। हर वो शब्द कैसे बना, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, ओरिजिन क्या है, उसका वर्बल रूट क्या है, कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सी विभक्ति है, संधि विच्छेद, ये वो, तो मैं सारा एनालिसिस करके ही आगे बढ़ता था। तो तो करना चाहिए, कभी कभी ऊपर नीचे तो चलता रहता है, पर और टाइम दीजिए, ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम, और अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। और किसी को पकड़ के बताया करिए कि हाँ ऐसे वैसे है, तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ। प्रभु जी मैं किसी को नहीं बताता नहीं। हूँ, पता नहीं क्या बोल रहे हो। कुछ नहीं समझ। नहीं नहीं, तो ठीक है, आप थोड़ा कंटिन्यू करते रहिए, वो हो जाता है, कोई बड़ी बात प्रभु जी नहीं है। मैं वो तो माया, सही वो बताऊँ तो माया 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 का थोड़ा अटैक रहता ही है ऊपर नीचे, पर फिर भी उसको साइड करते हुए ट्राई करते रहना चाहिए। प्रभु जी, क्योंकि मैं तो लातों का भूत हूँ, आप जब तक थोड़ी लाते चपेड़े ना मारे थोड़े पर तो आप कई जूम पे हो ना प्रोटीन, मैं जूम पे कैसे मार सकता हूँ? कोई बातों से टॉन्ट आपको मार। भी पता है, आपको भी पता है जूम पे आप भी बोले जा रहे हो। रोज ही रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, ये कहीं पब्लिक हो गई ना।